Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 4 English textbook. We are going to start our lesson from unit 2, Good Friends. SLOs of this lesson are: learn the use of there is and there are, learn the use of is there and are there. Page number 13 of your textbook. I hope you are familiar with the singular and plural noun. So, to understand this concept, the concept of singular and plural will be cleared. How? For example, there is indicates to something which is singular, item or person, and there are indicates to the plural, more than one item and person. Look here, we use there is to show the existence of a single item or person in the present situation, and also remember that is for this present situation and are for the present situation but for the plural one, or we use for with I, you, they, and is for singular item and person in the present situation. ये आपने याद रखना है कि there is जो है एक single item और person की तरफ इशारा करता है present situation में, और there are जो क्या है plural items और person की तरफ indicate करता है. Page number 14 of your textbook, we use there are to show the existence of two or more items or persons in the present situation. Again, the use of there are किसकी तरफ indicate करता है? Present situation में more than one item, like two or more items or person in the present situation, जो presently मौजूद हो. Not about the past. Past का नहीं, present का. There is और are दोनों जो हैं, is और are दोनों present situation की तरफ इशारा करते हैं. And we know from is and are that the person or item is singular or plural. Look here, some examples here. There is or there are. We have two options here. Like there is nobody on the island. There is nobody. कोई भी नहीं है आयरलैंड पे. ये एक आइलैंड है, यहां पर आपको कोई नहीं दिख रहा, तो क्या है? There is nobody. कोई भी नहीं है यहां पर. There is a detective spying my garden. Yes, there is one detective here. क्या है? एक जासूस है, spying कर रहा है, जासूसी कर रहा है मेरे गार्डन में. Is indicating that the detective is one singular person. And here you can see there is or there are, we have two options here. Again, there are three kids playing with leaves. These are the leaves and these are three kids we have. So, kids are what? Yes, plural. And we have the specific number 3 here. So, the kids are here 3 and they are playing with the leaves. So, it is indicating that in present situation, there are 3 kids. Look at this one here. There is a library in my school. A library. If we have one item or person, we will have a here and here. With the vowel, we will have an, like an orange, an umbrella, because the word is starting with the vowel sound. So we will add an here. But if the word is starting with the consonant sound, so we will add a here. A is indicating you that the person or item is one singular. So don't confuse yourself, just add is here. If we have a here, it's really clear to you that the item or person is one in number. So you can easily put is here. There is a library in my school. Library is one. We are talking about one library. Now let's get back to the exercise of it. Fill the blanks with there is or there are. So you have to look at the persons or items here and fill it with there is and there are.
There is with singular and there are with the plural. 10 pencils in the box. We have specific number here. Yes, 10 pencils. हमारे पास pencils कितनी है? 10 है बॉक्स में. तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि यहां पर क्या आएगा? देयर आएगा, क्योंकि प्लूरल है. नाउन क्या है हमारा? पेंसिल. तो यहां पर आएगा आपका देयर आर. A bicycle in the garage. It's very obvious. I told you how you will recognize the sentence with there is. Yes, you can see here, a bicycle in the garage. The singular item here, the one bicycle here. So it is obvious that we will put there is here. The third one, some cups on the table. Some cups, like it's not one. Some cups, कुछ cups हैं. Some cups से आपको पता चल रहा है कि जो item है वो singular नहीं है, या तो 2 है या 3 है या 4 है. Some cups हैं. The number is not specified here, but you can estimate that there are more than 1 cups here on the table. So again, there are some cups on the table. The fourth one, a TV in the bedroom. Yes, very obvious. We will put there is here a TV, singular item. I want you to fill these blanks by yourself. Your concept of there is and there are very clear. There is indicates to one singular item or person in the present situation, and there are indicates to more than one plural form of nouns. Plural items or person. This one here, asking question using is there, are there. How? We use is there in the beginning of a sentence to ask a question about the existence of a single item or person in the present situation. जब हम सवाल पूछते हैं किसी सिंगुलर आइटम और पर्सन के बारे में, तो हम क्या करते हैं? स्वीप अप कर देते हैं. जैसे देयर इज है, इसको स्वीप अप क्या करेंगे? इसकी पोजीशन, उसकी जगह चेंज कर देंगे. कैसे? इसको शुरू में ले आएंगे और देयर को इधर ले आएंगे. अब आई मैंने क्यों लिखा है कैपिटल? बिकॉज जब आपका कोई भी नया सेंटेंस, न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहले वर्ड का पहला लेटर क्या होता है? हमेशा कैपिटलाइज होता है. जब हम इंक्वायर करेंगे, इंटरोगेट करेंगे अबाउट अ पर्सन और आइटम, अबाउट अ सिंगुलर पर्सन और आइटम, तो हम क्या लगा देंगे? इज को पहले कर देंगे और देयर को बाद में, और आखिर में क्वेश्चन लगा देंगे, और आखिर में क्या कर लेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. इज देयर. जैसे कि इस सेंटेंस को लें, इज देयर अ टीवी इन द बेडरूम. अब ये क्या है? क्वेश्चन फॉर्म में है. हम इंटरोगेट करें, इंक्वायरी करें कि क्या ये एक टीवी बेडरूम में है. इज देयर अ टीवी इन द बेडरूम? क्या बेडरूम में एक टीवी है? हम क्या करें? इंटरोगेट करें, क्वेश्चन कर रहे हैं. वी यूज आर देयर इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर आइटम्स और पर्सन इन द प्रेजेंट सिचुएशन. अब प्रेजेंट सिचुएशन में हम प्लूरल आइटम्स और पर्सन के बारे में कैसे इंटरोगेट करेंगे? यस, सिंपल उसी की तरह जिस तरह हमने इसको किया था, हम इसकी जगह चेंज कर देंगे. कैसे? आर को पहले लिख देंगे और देयर को बाद में. आर देयर 10 pencils in the box. उसी सिंपल सेंटेंस को हमने क्या किया है? क्वेश्चन फॉर्म में चेंज कर दिया है. पहले वो स्टेटमेंट था, जनरल स्टेटमेंट था कि क्या था? देयर आर 10 pencils in the box. हमने उसी को क्वेश्चन फॉर्म में चेंज कर दिया, इंटरोगेटिव फॉर्म में. आर देयर 10 pencils in the box. अब ये क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन में हम प्लूरल आइटम्स और पर्सन के बारे में क्या कर रहे हैं? इंटरोगेट कर रहे हैं. नाउ लुक हियर द एक्सरसाइज ऑफ इट. फिल इन द ब्लैंक्स विद इज देयर और आर देयर. अब ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? क्वेश्चन फॉर्म में हैं. आपने जो है क्या करना है? सिंगुलर के लिए इज देयर लगाना है और प्लूरल आइटम्स और पर्सन के लिए आर देयर लगाना है. फर्स्ट वन है 5 pencils in the box. Yes, 5 pencils. Specified number here. A motorbike in the garage. Again we have a motorbike. एक आइटम है इधर, एक मोटर बाइक के बारे में सवाल हो रहा है, तो क्या आएगा? Is there.
The third one, some plates on the table. Again, उसी को देखें, उसी को चेंज किया हुआ हमने, इधर are there, क्योंकि some plates क्या है, more than one है. Fourth one, a computer in your home. A computer. So the item is one here. Is there a computer in your home? The fifth one, 6 chairs in the kitchen. Yes, 6 chairs. Specific number है हमारे पास 6. ज्यादा है एक से तो क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे हम, are there. बाकी के ब्लैंक्स आपने खुद ही फिल करने हैं, 6, 7 और 8. This is your home task from textbook page number 11. Unit number 2 का टेक्स्ट है ये आपका. आपने क्या करना है, just give it a read and identify the use of there is and there are in this text here. जहां पर भी there is और there are का यूज हुआ है, which is indicating to singular person or item or plural person or item, you have to underline it. आपने इसको पूरा पढ़ना है और जहां पर भी there is और there are का यूज हुआ आपने उसको अंडरलाइन करना है. Dear students, this is your home task from Summer Pack, page number 18. We have an activity here. Make 3 groups of 5 students in your class and answer the following questions using there are and there is one by one. We have learned the concept of there are and there is. There is indicates to one singular item person and there are indicates to more than one item and person. So you have to carry this activity. Teacher will ask how many rooms are there in your home, and one by one every student will answer it. Their answer might be different. Someone will say 4 rooms, there are 4 rooms. You have to answer it in plural form. If your teacher is asking are there, she is asking about more than one item or person. Okay? If there is there, you will answer in it into singular form. Like there is one kitchen in our house. Whatever she asked the question. But keep in your mind there is and there are indicates to what? Question 2, question 3, page number 19, question 4 and question 5. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.